And today we are before treatment live, and today date is 1st August 2022. And नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पर। और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं। इनफैक्ट आज हम ग्रुप थेरेपी सेशन स्टार्ट करेंगे और इस लाइव में जो इंक्लूड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंक्लूड सर्टेन टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड देन वी विल बी लिसनिंग द प्री ट्रीटमेंट वॉइस ऑफ द पेशेंट हु केम फॉर treatment here for voice therapy, and they are having different communication disorder like vocal cord paralysis, high pitch voice, sulcus vocalist. So you'll be listening their voice before treatment, and I'll be also discussing about the signs, symptom and cause and the treatment of such voice disorder, and I'll be talking about kind of service we provide in this live. I'll be also talking about who are the good candidate for our voice therapy services, and there is a very common question we get in our comment box, and that is how to contact us, where is our center, so that I'll be also explaining. I'll be discussing about the treatment cost, duration of treatment, online or offline, and how to differentiate between professional speech therapist and healthcare quacks. This is very important nowadays in the social media. There are so many social media's product also. So how to differentiate I'll be talking, and I'll be talking also about in the name of a speech therapist or in the name of audiologist, if somebody is spoiling your voice, vocal cord or hearing, where to report, that also I'll be talking. I'll be giving few tips to keep your voice healthy, and I'll be also talking about, because in YouTube channel I have seen some other YouTube channel some videos will be there and the patient is talking in high pitch voice in the first 1, 2, 3 and the next 1, 2, 3 is in the low pitch voice. So is the change at word level is the end of the treatment, so I'll be discussing about that. So let's go one by one. So first is introduction about myself. So introduction is very, very important because this can be done by any professional only. Healthcare quacks will not be tell you where they have studied in proper introduction. So my name is Sanjay Kumar. By profession I am speech language pathologist. I love to tell people should tell me SLP. SLP means speech language pathologist. And I have studied from AIIMS Delhi, All Indian Institute of Medical Science, New Delhi. There I did my graduation in the speech and hearing science, and my degree name is Bachelor of Science Honors Speech and Hearing. And I did my post graduation in the field of speech language pathology from the University of Mysore. So again, my master degree name is Master of Science in Speech Language Pathology. So this is my introduction, and my center name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, and that is located in Bangalore, and we don't have branch at this moment. Okay, and I'll be talking about the patient who came for different voice disorder. I'll be showing first and then I'll be calling to them. So these are the patient. You can say hi. Hi. We are live at our YouTube channel. So I'll be calling one by one to them. So yeah, just so first I am going to call Ankur. Ankur, please come here. अंकुर जी, हम लोग लाइव है, इधर आ जाइए. सो व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू हैड, व्हाई यू केम हियर? वी आर लाइव बिफोर ट्रीटमेंट एट आवर यूट्यूब चैनल. मेरी आवाज़ पतली आती है, कई बार मोटी आती है, कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है, पर मैक्सिमम टाइम जब फ़ोन पे बात करता हूँ तो आवाज़ जो है लड़कियों जैसी आती है. तो उस चीज़ से मैं बहुत परेशान है. आपका प्रोफेशन क्या है? बाय प्रोफेशन मैं बोल सकता हूँ कि मैं लेक्चरर. अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूँ और वहाँ पर एकेडमिक वर्क करता हूँ और अपनी रिसर्च करता हूँ PhD. तो इस वॉइस की वजह से क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? वॉइस की वजह से क्लास लेने में दिक्कतें आती है और कई बार आवाज़ फट जाती है. ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को 8 दिन में ठीक करेंगे और हम 8 दिन के बाद फिर से लाइव होंगे. तो जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे तो आप उसको भी ज़रूर देख पाएँ. और मैं नेक्स्ट पेशेंट को बुलाना चाहूँगा, तुषार को. सॉरी, एक मिनट, आपका वो मैंने पता नहीं आवाज़ कैच हुआ था, कोई माइक लगाना था, सॉरी, पता नहीं कितना कैच हुआ था, लेकिन फिर से 1-2 लाइन बोल दीजिए अपने बारे में और अपनी प्रॉब्लम के बारे में. जी जी, मेरा नाम अंकुर नाविक है और मुझे फीमेल वॉइस और बोलने में समस्या आती है कई बार. मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ और वहाँ पर मुझे लेक्चर्स लेने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है. ठीक है, मैं अब नेक्स्ट पेशेंट को बुलाऊंगा, तुषार को. तो तुषार, आप आ जाइए प्लीज़. हाँ, थैंक यू.
So, Tushar, tell us what exactly problem you are facing and why you came here. So my name is Tushar Sul. I came from सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. मैं यहाँ पे स्पीच थेरेपी लेने के लिए आया हूँ. मुझे सॉफ्ट वॉइस और फेमिनिन टाइप वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है. कभी कभी वॉइस ब्रेक भी हो जाता है जब थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बात करने जाता हूँ तभी. मैं अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहा हूँ. तो कभी कभी इंटरव्यू कॉल आते हैं तो उसमें भी ग्रुप डिस्कशन रहता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है ग्रुप डिस्कस करते टाइम. तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रमोशन. ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर 8 दिन में हम लोग ठीक करेंगे. और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, ग्रुप डिस्कशन. तो आजकल क्या होता है कि किसी भी जॉब के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आपके पास अच्छी वॉइस नहीं है, अच्छी वॉइस करने का मतलब अगर आप मेल हैं तो एक वॉइस मैस्कुलिन नहीं है, आपके एज के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, तो आप उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके जॉब में और इंटरव्यू के जो इंप्रेशन है उस पर. तो हम लोग इस प्रॉब्लम को जरूर 8 दिन में ठीक करेंगे. थैंक यू कि आप इतनी दूर से हम पे भरोसा किया. और हम नेक्स्ट पेशेंट को बुलाना चाहेंगे, आनंद कुमार को. आनंद कुमार आप आइए. हाँ, आप बैठ जाइए. थैंक यू. सो आनंद कुमार जी, हम लोग यूट्यूब लाइव हैं और बताइए अपनी प्रॉब्लम के बारे में, यहाँ क्यों आए हैं. Actually, my left vocal cord is paralyzed. Due to that, my voice is not proper. So I have come here to figure out this problem, and that is the main cause. Because vocal cord is paralyzed, due to this, harsh voice is coming. Okay, thank you. We'll do the needful, and thanks for coming and showing faith on us. And those who are watching this live, please subscribe our YouTube channel so that once we'll do post-treatment live, you can also watch again. And Anand, इसके बाद है वरुण. वरुण is having sulcus vocalist. Yes. So Varun, tell us why you came here and what is the problem. Hello, my name is Varun. I came here because I am facing a high-pitched voice, hoarse voice. I have less loudness and I have sulcus vocalist. I have bilateral sulcus vocalist, so I have came to Dr. Sanjay. Okay, so thank you. We'll do the needful. And those who are watching, please subscribe our YouTube channel, press the bell icon, and don't forget to watch the post-treatment live. And next I'll be calling others. So others, please come. Yes, others. What exactly problem you are facing? We are live at our YouTube channel. Actually, I'm facing problems or interviews due to my voice problem, and I like to improve my voice. Yes, so based on my assessment, we have observed two things. One is the voice problem, like your voice is childish or feminine or high-pitched voice, and at the same time, we have pronunciation problem. So this 8 days program is designed for the voice therapy. So basically, we're working on the voice, not on the pronunciation during this. So after 8 days, we'll be doing live. Okay. Okay, so what are the challenges you're facing when you're calling on the phone? Sometimes people call madam like that, so it will become nervous for me. Okay, thank you so much. We'll do the needful and please have a seat. Yeah, you can take this chair. I'll talk. Yeah, you take this chair. So as I told, I'll be discussing in this live some other topics also, like introduction about myself that we have done, and pre-treatment voice of different patients, so that already we have done. And now we'll be talking about signs, symptom, cause, treatment of different voice disorder. To understand the different voice disorder, abnormal, some voice disorder, let's first understand the normal speech production mechanism. So once we understand the normal, it will be easier for us to understand the abnormal. Okay, so for normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. Here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cords start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. These are known as articulators. So when we say one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sound generate, we modify that sound into different sound
with the help of our articulators. Like when you want to say the tongue is coming between the teeth, when you want to say both the lips are coming closer, when you want to say back of the tongue is getting elevated. So each and every sound has own place, own manner of articulation. So when the pronunciation problem patients comes to our center, sometimes we do the hearing evaluation also, because it may be related to the hearing impairment, and then if needed we suggest a hearing aid, or we fit the hearing aid also, but that is another issue. So when you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence there are so many words, in each word there are so many sound, each sound has own place, own manner of articulation. So it's quite complex process. In this process there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among these muscles goes, fluency goes. That can be reflected in the form of stammering. So I think today we have shown the sample of 5 patients only, but there are stammering patients also. They are not comfortable with the video, so number of patients are more. So if coordination will be not be there, the fluency will be the problem. Patient will get stuck. That can be seen if stammering, like coherence, sometimes pause, prolongation, etc. And when the place of articulation is wrong, manner of articulation is wrong. For example, for the production, you need to put your tongue between the teeth, but you are not putting your tongue between the teeth, you are putting somewhere else, then there will be pronunciation problem. So that can be seen in case of misarticulation of. And now let's concentrate on high pitch voice problem. I think there are so many patients having high pitch voice. So high pitch voice problem can be occur due to so many reasons. Sometimes the vocal cords will be normal. In that case also the pitch problem can be there. Sometime in muscle tension dysphonia also. Sometime in sulcus vocalist also. Sometime in phonatory gap also. So understanding the problem is very, very important. The reason of, because for healthcare quacks it's all high pitch voice are the same. But being a professional, for us all the high pitch voice are not same. We need to understand. In the rare case can be hormonal issues also. So during puberty, I am talking in a condition where the vocal cords I am considering normal. During puberty, there is the hormone starts secreting in case of boys. Like during puberty, that hormone name is testosterone. Because of testosterone, mass of the vocal cord increases, length of the vocal cord increases, and then pitch reduces. So before puberty, vocal cord is a thin string of a guitar-like structure. But during puberty, due to the testosterone impact, vocal cords become thick. And when the vocal cord becomes thick, pitch reduces. So if the guitar string is thin, that is before puberty, the pitch will be higher. And during puberty or after puberty, if due to the testosterone, mass of the vocal cord, length of the vocal cord increases, so it becomes thick. So the ideally pitch should be low. Okay. So what happened? The child, that boy has spoken from childhood to puberty in a high pitched voice. And during puberty, mass got increased, length got increased. So automatically he should switch on to the low pitched voice, but there is history of so many years he has spoken in a high pitched voice. So what will happen? He will find difficulty to switch on to the new voice. So reason we can say a little bit psychological. So he will not able to switch on to the new voice. So what he will do to maintain his childish voice, instead of vibrating the whole mass and the whole length of the vocal cord, he will start vibrating only thin edges of the vocal cord. So the vocal cord is actually thick string of a guitar-like structure, but behaving like a thin string of a guitar-like structure. And when the guitar string will be the thin, the pitch will be higher. So what I will do as a speech language pathologist or voice therapist, I don't replace the vocal cord. I don't give new larynx. What I do, suppose thin edges are vibrating before my therapy, and if I stimulate whole mass and the whole length will start vibrating, so the vocal cord which was behaving like a thin string of a guitar will start vibrating and behaving like a thick string of a guitar like a structure, and when the guitar string will be the thick, pitch will be lower. So this is the biophysics behind that. There is a one relation also, if you are a science student and the acoustics you know a little bit. N is equal to 1 by 2L under root T by M. So here N is the frequency. Frequency means if any string is vibrating, here is the vocal cord. In 1 second, in 1 second how many times it's vibrating like. So we call it a frequency. So what will happen? N is equal to 1 by 2L under root T by M. So nature has given the sufficient mass and the length, but you are not vibrating whole mass and the whole length of the vocal cord. So if vibrating mass is less, vibrating length is less, then N will be higher. And if after the voice therapy, if I stimulate whole mass and the whole length, the vibrating mass will increase, vibrating length will increase. If M is increasing, L is increasing, the N will reduce. Just try to recall the formula. N is equal to 1 by 2L under root T by M. If you will try to correlate, you will get an idea. So I am not replacing the vocal cord. I am not giving new larynx. What you are having,
just I'll be helping you to explore the most effective manner. That's why if you watch, those who are watching this live, if you watch my YouTube channel, you will find different patient, different improvement. So there is one patient here, I think his name is Varun Mehta. So his vocal cord is having sulcus vocalist, bilateral sulcus vocalist. So nature has not given sufficient mass and the sufficient length. So I will not be able to give him the new mass, new length. But there is a one relation as I told, n is equal to 1 by 2 L under root T by M. So I can't do anything L and M. But if I help him to talk in a more relaxed manner, so if you reduce the tension, the voice quality may improve. And at the same time, he's having the phonatory gap also. So we'll try to bring the vocal cord more closer together so that air wastage will reduce, breathiness will reduce, and the voice quality may improve. But how much improvement is going to happen, time will give the answer. So even I don't know before trial in case of sulcus vocalist. So now I discuss, and the high pitch voice also can occur due to the hormonal issues. And as I told, sulcus vocalist also in the muscle tension dysphonia also. So understanding of the problem is very, very important, and based on that we should give the therapy. And now let's discuss about the vocal cord paralysis. And one patient, Anand Kumar was having vocal cord paralysis. His left vocal cord is paralyzed. So why the vocal cord paralysis happen? So the nerve which supply to the vocal cord technically we call recurrent laryngeal nerve. It is a branch of vagus nerve, 10th cranial nerves. So due to sometime infection, viral infection, bacterial infection, due to accident, during surgery, if that nerve get damaged, the movement of the vocal cord will be restricted, or it will be movement will stop. So suppose in that case, in case of Anand, the left vocal cord is paralyzed. So if this is the left vocal cord, if suppose, and if we speak or say both the vocal cord will come closer together. So if left vocal cord is paralyzed, when he's saying or he's speaking, so only right is moving, left is not moving. So there is a gap creating between the vocal cord. Technically we call phonatory gap, and air is getting wasted. That's why his voice was very, very breathy. And in the vocal exercise, what we are going to do, we'll try to bring the vocal cord more closer, so that it can be in two different way. Either the paralyzed vocal cord may start moving after voice therapy, or if it will not, then the normal vocal cord will try to bring more towards the paralyzed one. So the gap will reduce, and once the gap will reduce, the air wastage will reduce. So once we'll put air pressure to vibrate the vocal cord, the amplitude of vibration will improve, because air wastage is reducing. So the loudness will improve and breathiness will reduce. And the many people will be having curiosity how much time it will take to correct the vocal cord paralysis voice problem. So I suggest please explore our YouTube channel playlist, and you will find many videos before and after, and that will give you an idea, because before treatment also we announce the date, and after treatment also we'll tell the date in the videos. And so earlier I was talking about a high pitch voice and why it happens, and how to identify it's a high pitch voice sign and symptoms. So if child age is, suppose the boy's age is pubertal or beyond puberty, suppose he is 13, 14 or more than that age, and still he is talking in a childish voice, and when he is talking on the phone, people are saying ma'am, or they are confusing he is a boy. So it can be a symptom of high pitch voice. And treatment, as I told, understanding of the problem is very, very important, and based on that we try the speech therapy and the voice therapy. And of course, if sufficient whole mass and the whole length is not vibrating, as I told in that formula, so we stimulate whole mass and the whole length of the vocal cord. So with a certain vocal exercise, technically we call voice therapy. And so sign, symptom, cause and treatment, I think rough idea I have given to all this communication disorder. Sulcus vocalist is left. The sulcus vocalist is a condition where nature will not give sufficient mass and the length of the vocal cord. So the vocal cord will be thin. So that's why the pitch become higher. So in that case, I can't give new mass and the new length. I work on the tension to reduce the tension, so that at least some pitch should improve, pitch should lower. And next thing I wanted to talk was kind of services we provide. To understand the kind of services we provide, those who are watching this live, I suggest please explore our YouTube channel playlist, and once you explore, you will find different communication disorder playlists. For example, vocal cord paralysis, high pitch voice, and sulcus vocalist, phonatory gap, muscle tension dysphonia,
misarticulation, functional aphonia, functional dysphonia, after stroke aphasia happen, that also will be found. And so that will give an idea how a certified speech language pathologist changes the life of people having communication disorder. In fact, we find the playlist of the hearing aid patient, like after hearing evolution, once we fitted the hearing aid, how the communication improved, and after the stroke aphasia happened, a speech language disorder, and we gave the therapy, how the condition improved. So all kind of communication disorder playlist we have made it to create awareness, and all the playlists will be having pre and post treatment videos, and that date also is mentioned when we started the treatment, when date was over, so you'll get an idea of the duration of treatment also. And the next is who are the good candidate for our voice therapy services. This is a very interesting thing. So everyone is not a good candidate for our services because that requires a lot of motivation. So sometime I get a call, sir मेरी voice hoarse आ रही है, कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा, आप गारंटी लेते हो? इस तरह के पेशेंट को मैं मानता हूँ वो गुड कैंडिडेट नहीं है वॉइस थेरेपी के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बात हॉर्स वॉइस है। हॉर्स वॉइस कैन बी ए सिम्टम, सो इट कैन बी ड्यू टू द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वोकल नोड्यूल, वोकल कॉर्ड पॉलिप, vocal cord cyst. There can be so many reasons, and he is in so much in hurry without understanding the problem. He is asking for the guarantee, and the patient also required the motivation and the patience. So this kind of thing should be there, and of course after the perceptual evaluation and maybe sometime after seeing the stroboscopy report, we also give the feedback. But even though everything is fine, but patient don't have the patience, so for them also we have found difficulty in improvement. So जैसे कि आप लोग ढूंढते हैं कि कौन अच्छे डॉक्टर हैं, तो हमारे लिए भी होते हैं कौन अच्छे पेशेंट है जिनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सब कुछ ठीक है, प्रकृति ने सब कुछ सही दिया है, पेशेंट के पास पेशेंस नहीं है और वो गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा है। तो कौन सा, आप एरोप्लेन से चलते हैं तो पायलट गारंटी लेता है कि प्लेन क्रैश नहीं होगा? अगर क्या आप केस कोई लड़ता है, वकील गारंटी लेता है केस में जिता देगा? ड्राइवर कभी ड्राइविंग करता है तो क्या गारंटी लेता है कि वो एक्सीडेंट नहीं होगी कभी भी? तो हर प्रोफेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी हमारा एक्सपीरियंस जो भी है उसके आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि पिच और लाउडनेस की प्रॉब्लम में हमने काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट देखे हैं अपने क्लिनिक में, और मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हुई है। क्यों एक्सपर्टीज़ हुई है? क्योंकि मेरा पैसन है वॉइस थेरेपी देना, तो पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं, मैं ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा पेशेंट का किया हूँ। और क्यों मुझे एक्सपीरियंस भी, क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा मिला? क्यों? क्योंकि आई स्टडी फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो एम्स में क्या होता है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी अगर कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें काम करने चाहें तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो एम्स में जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिला वो फिर मास्टर में ऑफकोर्स जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मुझे मिला वहाँ उतना ज़्यादा एम्स इतना तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिला ड्यूरिंग मास्टर, बट थ्योरेटिकल नॉलेज इंप्रूव हुआ। और उसके बाद मेरा पैसन था वॉइस थेरेपी देना, तो खुद पेशेंट्स को हमने सीखा, और इनफैक्ट हम लोग 8 दिन में भी कई सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो ये है मैं बता रहा था हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, वेयर इज़ आवर सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। वंस विल गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ आवर वीडियो, यू विल फाइंड आवर वेबसाइट। ऑन वेबसाइट क्लिक द रीच मी, and then you'll find email ID, contact number, and on the Google map where is clinic situated, and then you can call us, so or you can contact us. And एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन होता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बारे में पेशेंट पूछते हैं। तो उसके लिए पहला सेशन ये है कि फर्स्ट यू कैन कॉल अस, वी लिसन द वॉइस, means we'll do the perceptual evaluation, and after the perceptual evaluation if needed we suggest certain tests, and after that only we comment about the treatment cost and treatment duration। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कई सारे पेशेंट कॉल करेंगे, बोलेंगे सर मुझे मिस आर्टिकुलेशन की समस्या है और कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा। जब मैं टेस्ट करता हूँ तो स्टैमरिंग निकल के आती है। और कभी पेशेंट बोलते हैं सर मुझे हॉर्स वॉइस है, कितना टाइम कितना खर्चा लगेगा। तो हॉर्स वॉइस एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन हॉर्स वॉइस होने का कारण समझना इंपॉर्टेंट है। हॉर्स वॉइस तो कफ एंड कोल्ड में भी हो सकता है, तो जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तो ये डिफ़िकल्ट है ट्रीटमेंट कॉस्ट, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बारे में जानकारी देना लाइव में के दौरान। और फिर एक है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, तो दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द आफ्टर परसेप्चुअल एवोल्यूशन वी कमेंट ऑन द इश्यूज, एंड हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट एंड हेल्थ केयर क्वैक्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल सोशल मीडिया में कोई भी अपने नाम के आगे स्पीच थेरेपिस्ट लगा लेता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट असली है या नकली है, इसको जानने के लिए सबसे पहला ये चीज़ पता कीजिए कि उसने कौन से कॉलेज से, स्पीच इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से स्पीच इंजीनियरिंग साइंस में डिग्री प्राप्त की है, कौन से ईयर में उन्होंने डिग्री प्राप्त की है,
और फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी जानकारियों के पीछे पड़ जाइए। इनमें से कोई भी जानकारी अगर अपने कॉलेज का नाम छुपाता है, कौन सी ईयर में डिग्री प्राप्त की, ये भी छुपाता है, हो सकता है RCI नंबर भी ABCD कुछ गलत भी डाल सकता है, उससे कोई ये नहीं है। लेकिन अगर कौन से ईयर में अपनी डिग्री प्राप्त की, इस बात को कौन से कॉलेज से उस प्राप्त की, कौन सी यूनिवर्सिटी से उसका कॉलेज एफिलिएटेड था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देता है तो वो फेक होगा। अगर मान लीजिए मैंने क्या कहा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिग्री, कौन सी ईयर में डिग्री प्राप्त की, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि नहीं, इसमें से कुछ भी चीज़ मिसिंग है तो दाल में काला है। सारी चीज़ें चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए, डिग्री का नाम भी चाहिए, कौन से ईयर में डिग्री प्राप्त किया, क्योंकि अगर फेक कॉलेज फेक डिग्री लिखेंगे और ईयर नहीं देंगे तो कुछ बचने की गुंजाइश है, लेकिन ईयर देंगे तो उनके बैचमेट कैच कर लेंगे, फिर उनका कॉलेज वाले और उनके बैचमेट तो उनकी क्लास ले लेंगे, रिपोर्ट कर देंगे तो लेने की देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो फेक लोग होते हैं, कॉलेज, डिग्री और ईयर सबसे इंपॉर्टेंट, ईयर का नाम डालेंगे ही नहीं। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ अभी कुछ दिन पहले एक राहुल करके एक पेशेंट था, अभी अगर मेरे कम्युनिटी पेज में आप जाते हैं तो मैंने उसका शेयर किया है एक बार फिर से। उसको थी पिच की प्रॉब्लम, वो गया एक जगह, एक फेमस हॉस्पिटल में सर्जरी करा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला चलो सर्जरी से ठीक हो जाएगा। अब सर्जरी हुआ तो बोला अब 6 मंथ तुम्हें वॉइस थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो अब 6 मंथ उसके पास टाइम नहीं था, तो थोड़ा 1 आध महीना कुछ रुक कर कुछ दिन तक थेरेपी लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कहीं उसने यूट्यूब में कहीं वीडियो देखा, और वो जो था वो, मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं था, कोई भी हेल्थ केयर क्वैक ही कहेंगे क्योंकि वो स्पीच थेरेपी दे रहा था। वो बोल रहा था कि मैं 1 दिन या 2 दिन में ठीक करूँगा, और उसके बाद जब उसके पास गया तो उससे चिल्लाया, शाउटिंग कराया, और शाउटिंग कराने के बाद फिर बाद में उसकी आवाज़ बैठ गई। फिर जब ENT के पास गया, वोकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन हुआ तो पता लगा कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गई है। तो ये वॉइस थेरेपी मजाक नहीं है, जो लोग सोचते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट या किसी झोला छाप से ट्रीटमेंट करा लिया। तो नेक्स्ट था कि टिप्स टू कीप योर वॉइस हेल्दी। तो वॉइस को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर इज़ अ वेरी गुड लिब्रिकेंट। सो 10 से 12 ग्लास एक दिन में अगर रूम टेम्परेचर पे पानी पीते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। शाउटिंग अवॉइड कीजिए, शाउटिंग इज़ अ काइंड ऑफ वोकल अब्यूज़। बैकग्राउंड नॉइज अगर बहुत ज़्यादा हो तो दैट टाइम यू शुड अवॉइड टू स्पीक बिकॉज यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर टू टॉक, एंड अवॉइड थ्रोट क्लीनिंग। बार बार अगर हम ऐसे करते हैं नॉन स्टॉप आप करते हैं तो वोकल कॉर्ड में फ्रिक्शन होता है, उससे वोकल कॉर्ड डैमेज होने का डर रहता है। स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग से वोकल कॉर्ड पॉलिप होने का डर रहता है, उसके फलस्वरूप जो है वॉइस ख़राब हो सकती है। फिर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, GRD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, तो फिजिशियन से मिलकर उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि जो एसिड जो है अगर आप गले में ऊपर आता है GRD की वजह से तो दैट कैन डैमेज द वॉइस इन द वोकल कॉर्ड। और जब आप सोते हैं तो खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप रखिए। खाना खाया तुरंत सो जाएंगे तो जब डाइजेशन के टाइम में एसिड जो फॉर्म किया तो वो गले में जमा होगा और दैट कैन डैमेज द वॉइस इन द वोकल कॉर्ड। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी वॉइस और वोकल कॉर्ड्स हेल्दी रहेंगी। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि कई सारे मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, लोग दिखाते हैं वन एक पतली आवाज़ में बोल रहा है, अगला वन जो है मोटी आवाज़ में बोल रहा है। तो क्या ये एंड ऑफ द ट्रीटमेंट है? तो बिल्कुल एंड ऑफ द ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो भी यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो डालते हैं उसको इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि फाइनल ट्रीटमेंट तभी हो पाता है कि कॉन्वर्सेशन पे पेशेंट पहुंचना चाहिए, बातचीत। तो वो सिर्फ एक आवाज़ दिखा देंगे, वन पतली आवाज़ में, अगला वन मोटी आवाज़ में, तो ये स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब है कि आगे की चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है, तभी तो। और ऐसे लोग भी अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और कई बार इनोसेंट लोग उनके झांसे में आके जो है अपना टाइम, पैसा और कभी कभी वॉइस और वोकल कॉर्ड सब कुछ डैमेज कर लेते हैं। तो जब भी आप कंपेयर कीजिए तो कॉन्वर्सेशन लेवल पे, जैसे मैं लाइव कराता हूँ अपने पेशेंट को, तो ऐसे कुछ वीडियोस देखिए तब थोड़ा बहुत आपको लगे। और प्रॉपर डिग्री भी देखिए, क्योंकि मान लीजिए किसी को बुखार लग गई, ठीक है, डॉक्टर ने दिया मान लीजिए ABCD कोई मेडिसिन, अब उस दवाई का नाम रट लिया, पड़ोस में किसी को बुखार हो गई, उसने वही दवाई दे दिया और संजोग से वो व्यक्ति ठीक हो गया, तो अब बोलते चलेगा मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं तो फिजिशियन बन गया। तो हमारे फील्ड में भी कई बार ऐसा ही होता है कि लेकिन अगर जो है झोला छाप डॉक्टरों का मैं तो यही डिफिनेशन देता हूँ कि ज़्यादा को मारा कम को बचाया। तो
स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए जो है हमारे फील्ड में 4 साल बैचलर, अगर अच्छा कुछ और अच्छा करना चाहते हैं तो 2 साल मास्टर, इतना करने के बाद क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं। और कोई जो है दिखाया कि पड़ोस में प्रॉब्लम क्या थी, उसका कैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट किया, फिर नेक्स्ट पड़ोसी को ट्राई किया, अगर गलती से ठीक हो गया तो अपने आप को वो इस रूप में प्रमोट करते हैं कि वो भी एक स्पीच थेरेपिस्ट बन गया, और फिर बोलेंगे कि अरे मेरा फीस तो बहुत कम है, डॉक्टर तो बहुत चार्ज करता है। तो उसके जो फीस होती है किसी भी डॉक्टर की, उसका सिर्फ 10-15 मिनट्स का फीस नहीं होता है, उसने जो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट किया वो टाइम का भी इन्वेस्टमेंट का फीस होता है। तो ये सब पेशेंट को समझना पड़ेगा। और एक पेट्रोल डलवाने के लिए जब आप जाते हैं तो एक पेट्रोल पंप पे तो सोचते हैं ना कौन सा पेट्रोल पंप वाला अच्छा पेट्रोल देता है, तो अपने कार और अपने बाइक के बारे में सोचते हैं। तो हेल्थ के बारे में कैसे आप एक झोला छाप से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं पूरी दुनिया में, और मेरा पैशन है वॉइस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना और हमारे फील्ड के जो भी झोला छाप हैं उनको एक्सपोज करना। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस। और आप लोग 8 दिन के बाद फिर से हम लाइव होंगे, तो ज़रूर हमारा लाइव देखिएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए जो लोग भी पेशेंट आए हैं, हालांकि पेशेंट की संख्या तो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो लोग वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप लोग हाय बोल सकते हैं। तो सबको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, कई सारे पेशेंट और भी हैं जो वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट लाइव में हम उसका उत्तर देंगे, या फिर हम कमेंट बॉक्स में जो जा करके रिप्लाई करेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।